dear viewers. I expect all of you to be good. I'm sure you are enjoying a blissful and healthy life with the blessing of supernatural power. Today, we are going to read Dawn article, which is a very essential and favorable for you people. It enriches your language, it beautifies your fluency, your writing skill, your reading skill, and your स्पीकिंग स्किल एज वेल. आज हम पढ़ेंगे एडवाइस है. किसी ने आंटी अग्नि से एडवाइस पूछी है, उस आर्टिकल को हम पढ़ रहे हैं. आंटी अग्नि से एडवाइस पूछी गई. डियर आंटी, टाइटल के बाद हम यूज करते हैं कामा. जैसे मिस्टर हो, मिसेस हो, डॉक्टर हो, वी ऑलवेज यूज कामा आफ्टर द टाइटल्स. इट्स ग्रामेटिकल रूल. डियर आंटी, कामा, आई एम मेंटली सिक एट प्रेजेंट. सेंटेंस कंप्लीट, फुल स्टॉप. मतलब कि डियर आंटी, मैं दिमागी तौर पर बहुत परेशान हूँ आजकल. आई एम अ सेंट्रल सुपीरियर सर्विस CSS एस्पिरेंट. अब जो पूछ रहा है, यहाँ पूछ रही है, वो CSS की एस्पिरेंट है, उसकी तैयारी कर रही है, यहाँ कर रहा है. एंड हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर इट फॉर मोर देन 3 years नाउ. हैव बीन प्रिपेयरिंग, दिस इज प्रेजेंट perfect continuous tense where we can use for, and since it has different use, preparing for it for more than 3 years now. Next sentence है, I am also an avid reader with a sound intellect. I am also an avid reader means continuous reader with sound intellect. उसके इंटेलेक्ट भी ठीक है, अच्छी तरह पढ़ भी सकता है या पढ़ भी सकती है. I can discuss philosophy and literature at great length. मीन्स बहुत अच्छी तरीके से वो फिलोसॉफी और लिटरेचर भी डिस्कस कर सकता है या कर सकती है, जो भी है. नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट मीन्स के द स्टूडेंट हु इज सीकिंग एडवाइस फ्रॉम डियर आंटी, आंटी अग्नि, ही इज गुड एट रीडिंग, एट राइटिंग, he is a CSS aspirant and he is facing some problems. Now he wants to seek suggestion, advice from Auntie Agni. However, this is a conjunctive word. However, whosoever, moreover, in addition, in spite of, despite, besides, these are conjunctive words and we use comma after them. These words are used to connect the phrases or connect the paragraphs. See, this is the first paragraph. We have got 3 lines in the first paragraph, maybe 3, 4 sentences. And this is second paragraph where, however, is used, which is the first word of the new paragraph, and comma is being used after the word however. See, this is the beauty of language. We have to keep these things in our mind if we want to crack or any competitive exam. My inability to regulate emotions in challenging and difficult situations leaves me totally confused as to what to do. अब कह रहा है कि माई इनेबिलिटी, मेरी एबिलिटी नहीं है, इनेबिलिटी है क्या, कि जो मेरे इमोशंस हैं उसको रेगुलेट नहीं कर पाता, और वो बहुत मेरे लिए चैलेंजेस हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में. जब वो चैलेंजेस होते हैं, इमोशंस आते हैं, तो मुझे बहुत परेशान कर देती हैं और समझ नहीं आता कि क्या करूं, इज टू व्हाट टू डू. अब इमोशंस कौन सी हैं वो देखें. एवरी टाइम आई हैपन टू फॉल इन सच अ सिचुएशन. एवरी टाइम, ऑलमोस्ट हर वक्त, आई हैपन, मेरे साथ ये होता है, टू फॉल इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में मैं तकरीबन हर वक्त फॉल करता हूँ. आई फाइंड escape इन पोर्न, के मैं जो पोर्न वीडियोस हैं, मेरी सोच वहाँ चली जाती है, वहाँ गुम हो जाता हूँ. यस, आफ्टर यस के बाद कमा यूज हुआ है. यस, यू हर्ड राइट, एक्सक्लेमेशन मार्क. कि ये सरप्राइज की बात नहीं,
ये आपने सही सुना है। जब व्हेन वी एम्फेसिस on any sentence or when sudden feelings of joy, surprise, sorrow are being expressed, we use exclamation mark. अब ये सेंटेंस में एक एम्फेसिस भी है और सरप्राइज भी है कि आप सरप्राइज ना हो कि मैं सेस एस्पायरेंट ऐसी सोच में गुम हो सकता हूँ, जा सकता हूँ। इट्स हकीकत, ये फैक्ट है, यू हर्ड राइट, आपने सही सुना है। आई हैव बिकम एन एडिक्ट, मैं उसका आदी हो चुका हूँ। आई हैव बिकम एन एडिक्ट, एडिक्ट मीन्स आदी, किसी चीज़ का आदी बना, मैं उसका आदी हो चुका हूँ। अल्दो आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट, और मुझे हकीकत का पता है दैट pornography exploits and objectifies women and impacts men's mental health badly। और मुझे पता है कि वो जो पोर्नोग्राफी है एक्सप्लॉइट करती है, बहुत बुरे असर छोड़ती है, इन ऑब्जेक्टिफाइज वुमन, और औरतों को भी ऑब्जेक्टिफाई करती है, परेशान करती है, एंड इम्पैक्ट्स मेंस मेंटल हेल्थ, और जो इंसान मेन की मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत बड़े और ख़राब असरात छोड़ती है। आई फेल एट क्विटिंग इट, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता या छोड़ नहीं सकती। अब देखें, पहले इसको पढ़ते हैं फिर मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। चलो सुने। जब हम इंग्लिश लिटरेचर में एमए करते थे तो वहाँ इंग्लिश राइटर थे, नॉवेलिस्ट थे, डीएच लॉरेंस, विलियम फॉकनर। वो बोलते थे कि लिटरेचर जो है वो रियलिटी ऑफ लाइफ है। और ये जो इस राइटर ने लिखा है आर्टिकल, ये लाइफ की रियलिटी है। देखिए, सेक्स इज द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, और इट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, रियलिज्म है। इट कैन नॉट बी अवॉइड, we cannot escape from the sex. Whenever we were student, whenever I was student, the same feelings came to my mind, and I tried to escape from them, but it was difficult. And sometimes the students, the people become addict of pornography videos. सो विलियम फोकनर और डीएच लॉरेंस ने बोला है कि लाइफ रियलिटी है, और रियलिटी में वाइस अच्छाइयाँ, वर्चूज अच्छाइयाँ एंड वाइस बुराइयाँ दोनों होती हैं। और लाइफ में हमेशा अच्छाई नहीं होती, बुराई नहीं होती, दोनों चीज़ें होती हैं। इन लाइफ में सेक्स भी लाइफ का पार्ट है। तो जब स्टूडेंट्स इस मसले पे बोलते हैं तो और उनको समझते हैं कि यू आर नॉट अ गुड पर्सन, दो इट्स नॉट लाइक दैट। सी, इट्स द फैक्ट ऑफ द लाइफ, एंड वन हैज़ टू कंसिडर these real emotions and feelings well। हर इंसान में फीलिंग्स, बीइंग अ ह्यूमन नेचर, ये फीलिंग्स होती हैं, एंड एवरीबॉडी फेसेस these types of challenges and issues, but what is the solution, what to do and how to do। जैसे इसने पूछा ना कि what to do, क्या करना चाहिए, उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर हम इस मुआशरे में ऐसी कोई बात करते हैं, when we talk anything like this, the different objections, comments are being uh, extended by different persons, because they are not of the critical mind, they are not up to that mark. He is a CSS aspirant, and therefore he or she can talk fluently, he or she can write, express his or her feelings expressly. But we are living in a uh, underdeveloped society where the people have different thoughts, they are narrow-minded, they are limited-minded, and they are not enough bold to tolerate these feelings and emotions, and they are not enough bold enough broad-minded to listen, to reply, to critically give the solutions of these problems। So in life ka part है, we cannot avoid this part of life, and we have to think it very carefully, and we have to give the emotions, we have to give the respect and feelings, we have to give respect to the feelings and emotions of the persons whosoever wants to seek suggestions from related in the context of these feelings। आगे पढ़ते हैं। Consequently, अब देखें यहाँ word हुआ है however, conjunctive word connects the first paragraph with the second। यहाँ हुआ है consequently, this word connects the second paragraph with the third। Despite my ceaseless attempt being round the corner, कि मेरा शेष attempt बहुत करीब है, round the corner means बहुत करीब है, I am unable to maintain
फोकस ऑन स्टडीज़ कि ये जो पोर्नोग्राफ़ी पोर्न वीडियोज़, सेक्स वीडियोज़ मेरे दिमाग में आ जाती हैं, तो वो मुझे स्टडी करने से भी कासिर बनाती हैं और फोकस स्टडी पे फोकस नहीं होता। रिग्रेटेबली बहुत परेशानी के साथ आई एम हैविंग द वर्स्ट टाइम नाउ और बहुत परेशानी के साथ मुझे कहना पड़ता है, पछतावा भी है कि मैं आजकल बहुत खराब वर्स्ट टाइम में से गुज़र रहा हूँ। I will sound tragic, it will sound tragic, but of course ये बहुत tragic है, खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक है, but I have had multiple moments that have provoked me to end my life. लेकिन ऐसे बहुत से मोमेंट्स आए हैं जिन्होंने मुझे मजबूर किया है कि टू एंड माई लाइफ, लाइफ को भी एंड करने का सोचा है, लाइफ को एंड करने पे मजबूर किया है इस पोर्नोग्राफी वीडियोज ने। आई डिडंट डू इट, ये मैंने नहीं किया, हालाँकि उस वीडियोज़ ने मुझे अपनी लाइफ़ को ख़त्म करने पे मजबूर किया था, लेकिन मैंने नहीं किया बिकॉज़ आई लव माय वाइफ, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ या कंसोलेशन भी कि उस फीलिंग से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स हैं, शी इज़ एवरीथिंग टू मी और वो मेरे लिए सब कुछ है। अब देखें ये है आगे भी है, therefore please help me resolve the problem of poor regulation of emotions and sex addiction. Addicted, I can't control my emotions or my porn addictions. So this shows that he is a male because he has talked about his wife. I can't control my emotions or my porn addiction. So this is the uh, article we discussed, we read, and you heard the problem of this person who is a CSS aspirant. At present, the hundreds, thousands of the aspirants are preparing for CSS across the board, across the country, across the provinces. Some of them are at Lahore, others are Islamabad, and others are in Hyderabad, Karachi, Peshawar. At different places, they are preparing. They have joined different CSS PCS academies. Attempt is around the corner. CSS and PCS attempts are around the corner. So they might be going through this critical issue problem. This is the fact of life which cannot be avoided. So the solution is mentioned in the second. The solution is mentioned here. If okay, we read it one paragraph. De addicted, इसको जवाब दे रही है. It takes a courage to talk about such deeply personal struggles, and I admire you for taking this step. You are clearly an intelligent and self-aware person, and even though you are feeling trapped, acknowledging your situation is a huge first step towards taking control of your life. Emotional regulation is a skill. It's usually not something one is born knowing. While some people are naturally better at managing stress, anyone can learn to handle the emotions. Consider practicing mindfulness techniques. There are plenty of apps and even YouTube tutorials that can teach you how to stay present and process your emotions without getting overwhelmed. Another thing Another thing that is very useful is journaling. Journaling. Many people avoid this because they don't like writing. However, it is a great way to externalize your feelings. Write down whatever is triggering you and how you respond to it. You don't have to show it to anyone. Over time, this can help you identify patterns. So this is a, uh, I think so. This is a bit lengthy paragraphs. There are more than 3 4 paragraphs. So we discussed it critically, and this would help you a lot in your CSS PCS preparation. If you want to improve your English language, we have to, and you need to go through the Dawn newspaper, discourse it critically, and see the syntactical meaning, syntax, structure of sentence, diction, choice of words, vocabulary, word meaning, grammatical structures, punctuation marks, uh, coherence, connection. All these things play a vital role in writing skill, and reading the newspaper does not only improve your
reading skill. It also improves your writing skill. It also improves your listening, speaking skill. So all these 4 to 5 skills will be covered while going through the newspaper. Thank you so much. Allah Hafiz.